Okay, so good evening, all of you, and welcome to today's session of Indian economy for UPSC. And we will be continuing our discussion on national income and national income accounting. And in the first few minutes, we will be revising yesterday's topics, and we will proceed our discussion in this area. So, if you can see in the PPT, let me share the PPT. Please let me know in the comment box that if the PPT is visible or not. So we built up our thought process, we built up our concepts, and we started with difference between gross and net. Yes, okay, Ritu. We started with the difference between gross and net. Okay, so we discussed the concept of gross. What is gross income? Okay, we discussed what is net income. We discussed gross tax collection. We discussed net tax collection. Okay, in GDP, the meaning of G means gross. In NDP, the meaning of N is net. So, in the last lecture, we learned one thing, that if you reduce something from the gross, then you get net. This formula you have to keep in mind. If you reduce something, from gross income or gross, you get net. For example, if we talk about personal finance, let us talk about gross income of a person, and if we reduce the taxes paid by him, or the intermediate consumption, then we get the net income. Okay, if we take example of government finances, what we call it as public finance, if we talk about gross tax collection, if we reduce the administrative expenses that incurred during the tax collection process, for example, the expenses done by income tax department, expenses done by the CBDT, expenses done by the GST department, and so on. So if you reduce those administrative expenses from gross tax collection, we get what we call it net tax collection. Similarly, we learned yesterday there is gross domestic product. Gross means total, domestic means within the border of the country, and product means production. And if we reduce the depreciation, from the gross domestic product, what we get? We get net domestic product. So what changes? Gross changes to net. Okay, otherwise there is no change. Domestic remains domestic and product remains product. Only the difference is depreciation. Okay, I hope you are getting all the concepts clearly. Let's proceed further and discuss the next topics. Now in this session, we are going to learn some new concepts, some new subtopics. For example, we are going to learn factor cost and market price. Okay, so let's discuss what is factor cost and what is market price and their difference. See, you can see in the slides, you can see in the PPT, you can see a factory here. It is a factory. And what is the function of factory? To produce goods. Okay, for example, let us say that this factory is producing the product P. We are naming this product P. What this factory do? This factory receives various factors of production. सारे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस फैक्ट्री के पास आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन, मनी,
मशीनरी एंड मटेरियल्स। ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस फैक्ट्री के पास आते हैं। फैक्ट्री इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करती है और इसका यूज करके प्रोसेस करके इस प्रोडक्ट को बनाती है। एंड व्हेन दिस प्रोडक्ट इज रेडी, when this product is ready in the factory, okay, then the price of this product is called as factory cost or factor cost. The price of the product, the price of the completed product is called as factor cost. See, right now the product is in the factory itself, okay, but we call it as a X factory cost. X factory cost, okay, when the product is ready in the factory. And when we add all the indirect taxes, for example of indirect taxes is GST. If we add all the indirect taxes, then we get the market price of the product. That it means that whenever the product is in the market, whenever the product goes to market, then the price of the product is called as market price. And what is the difference between factor cost and market price? Okay, I think there was some disturbance in network. Can you hear me right now? Can you hear? Yes, I am going to repeat. When the product is ready in the factory, when the product is ready in the warehouse of the factory, then the cost of the product is called as factor cost. That means it includes all the factors of production. It includes the prices, it includes the cost of all the factors of production. And if you consider the product in the factory, if you consider the completed product in the factory, then the cost is called as factor cost. And when you add indirect taxes, for example GST, when you add indirect taxes in the price, when you add indirect taxes in the factor cost, then you get the market price. So it is very simple to keep in mind. Whenever the product is in the factory, whenever the product is complete, and when the product is in the factory, then we consider the factor cost of that product. And whenever the product goes to market, whenever the product goes to the shops, then we consider the market price, because if all the indirect taxes are added in that price. You may have experienced, you may have purchased some Maggi, you may have purchased Maggi noodles. आपने Maggi noodles खरीदे होंगे, आपने पनीर का पैकेट खरीदा होगा, आपने ब्रेड का पैकेट खरीदा होगा। हर पैकेट पे आपको लिखा होता है द MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एंड ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस. Okay, so whenever all the taxes are added to the factor cost, we get market price. Is it clear? I hope you are getting my point. I hope I am audible. I hope you can hear my voice. Please let me in the comment box. Yes. So on the basis of this discussion, we are going to learn one new concept. Find some blank slide. Yes. On the basis of this discussion, we are going to learn one new topic, that is GDP at factor cost and GDP at market price. GDP at factor cost and GDP at market price. These are the two concepts. Okay. Now, what is the meaning of GDP at factor cost? GDP at factor cost is GDP when it is calculated
while considering all the factor cost. When only the factor costs are considered and then GDP is calculated, then it is called as GDP at factor cost. When market prices are considered, let me repeat myself. Two concepts we are learning today: GDP at factor cost and GDP at market price. Okay? यहाँ तक ठीक है? अगर ठीक है तो हाथ ऊपर कीजिए. Let me check my connection again. Okay. Vishu, Pasna, Rajdeep. So GDP at factor cost and GDP at market price. So you know what is GDP? GDP means money value of all the final goods and services produced within the border of the country in 1 year. Okay, let us revise that definition again. What is GDP? GDP is in one financial year means money value of all final goods and services produced within the borders of the country in one financial year. Okay, so when we calculate GDP and consider only the factor costs, okay, when we consider the factor cost and its money value, then the concept is, then it is called as GDP at factor cost. And when we consider the market prices, when we consider only the market prices of the goods and calculate the GDP, then it is called as GDP at market price. Okay, I hope you are getting my point. So see, GDP at factor cost and GDP at market price. So we know the relation between factor cost and market price. Now only we have discussed, अभी हमने देखा है factor cost plus indirect taxes. Indirect taxes is equal to market price. Factor cost plus indirect taxes is equal to market price. तो अब रिलेशन क्या होगा? GDP at factor cost and GDP at market price, इसमें रिलेशन क्या होगा? जब आप GDP at factor cost अगर आपके पास है और उसमें अगर आप indirect taxes ऐड करते हो, all the indirect taxes, then you get GDP at market price. समझ में आया? ये बताइए, कमेंट करके बताइए. Yes, correct. You can participate in this discussion. You can comment in comment box if you have a doubt. Okay, GDP at factor cost, इसमें जब आप indirect taxes ऐड करोगे तो आपको GDP at market price मिलेगी. अब इसमें एक डिफरेंस है, देखिए हमने क्या किया, GDP निकाला, हमारे पास दो फिगर्स है, एक है GDP एट मार्केट प्राइस, हमारे पास दूसरा फिगर है GDP एट फैक्टर कॉस्ट. तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूला अगर हम लगाते हैं, अब GDP एट मार्केट प्राइस में से अगर GDP एट फैक्टर कॉस्ट को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला GDP at factor cost plus all the indirect taxes, it gives you GDP at market price. तो अगर इस इक्वेशन में हम ये करते हैं कि GDP यहीं पे रखते हैं और GDP एट फैक्टर कॉस्ट को इसके तरफ भेजते हैं, क्या होगा? यहाँ माइनस साइन आएगा और यहाँ आएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट. तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस.
और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? What are those indirect taxes? These are all the taxes collected by the government in a particular. These are this is the gross tax collection by the government in a financial year. These are the total tax collection collected by government in one particular financial year. Understood? Please let me know in the comment box. It is very simple. जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हमने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दिया और हमें मिला इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? दीज आर द ऑल द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया, मार्केट प्राइस समझ में आ गई। अब हम समझते हैं सब्सिडी। अभी इसमें हमने अभी तक सब्सिडी की बात नहीं की है, अभी तक इसमें हमने सब्सिडी की बात नहीं की। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ मार्केट प्राइस की बात की। हमने क्या सीखा अभी तक? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, अब व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल हेल्प provided by the government to the producers. For example, this is government and they are providing financial help to the producers. For example, farmers. For example, farmers. Okay, तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि फार्मर अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्शन को अगर इंसेंटिवाइज करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ओके, तो सब्सिडी जो दी जाती है, दिस फाइनेंशियल हेल्प इज कॉल्ड एज सब्सिडी। नाउ लेट मी नो, मुझे बताइए कि अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडी देती है तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और सब्सिडी, इनमें क्या रिलेशन होगा? एनीवन, कैन एनीवन टेल मी what would be the relation between factor cost, market price and चलिए दिस हमें इसको इंटरेक्टिव बनाना है। मुझे बताइए, अगर सब्सिडी दी जाती है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट है 50 रुपीज़। फॉर एग्जांपल एक किसी प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट है 50 रुपीज़। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो जब वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में रेडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 10 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस? 10 plus 50 is equal to 60 rupees. So 60 rupees is the market price. Okay, now if government declares 10 rupees subsidy, if government declares 10 rupees subsidy, then what will be the market price? What will be the new market price? वो 70 रुपीज़ होगी या 50 रुपी होगी? यस, किसने अभी आंसर, हाँ रितु ने अभी आंसर दिया कि वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द सब्सिडी। यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड रितु। फैक्टर कॉस्ट, see the formula now, factor cost plus indirect taxes minus subsidies is equal to market price. Okay, now understand, what was the factor cost? 50 rupees. What are the indirect taxes? 10 rupees. What is the subsidy? 10 rupees. Now what is the answer? 5 plus 10 60 minus 10 50. Okay, so for example, if government gives subsidy of 25 rupees, okay, this is the new subsidy, 25 rupees.
So what will be the new market price? For example, subsidy is 25 rupees. Then what will be the new market price? सही है. Let me know in the comment box. If government increases this subsidy and make it 25 rupees, then what will be the market price? Very easy. 50 rupees plus 10 rupees, 60 minus 25 is equal to 35 rupees. 35 rupees. Correct? So what happened? What is the effect of subsidy? Effect of the subsidy is such that the market price got reduced. मार्केट प्राइस गॉट डिक्रीज्ड, मार्केट प्राइस कम हो गई है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोडक्ट को इंसेंटिवाइज करना है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडी देगी. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प देगी. उससे क्या होगा? फार्मर्स विल गेट इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूस मोर एंड दे विल यूटिलाइज दैट मनी एंड दे विल increase their production, and ultimately the benefit will be transferred to the consumers. What will happen? Ultimately the market price will also get reduced. तो मार्केट प्राइस भी कम हो जाएगी. तो सब्सिडी का जो कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि एक तो प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी भी मिलती है, प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, और प्रोडक्शन मतलब और कंज्यूमर्स को भी हेल्प होती है, मार्केट प्राइसेस भी कम हो जाती है. ओके, लेट मी रिपीट. एक्चुअली माय कनेक्शन इज वेरी मच स्टेबल. प्लीज कैन चेक your own internet connection. Because am I audible? Please raise your hand. Okay, so there might be some disturbances in the network. Okay, so I hope it is very clear the relation between factor cost, market price and subsidy. So let us take forward this discussion. चलो इस discussion को आगे बढ़ाते हैं. Are you excited? Is everybody excited? Just let me know in the comment box. Just raise your hand if you are excited. Then we will take forward this discussion. Yes. चलो अब देखते हैं. Now there are two types of things. One thing, we talked about taxes, and another thing, we talked about subsidies. Okay, now there are two types of taxes and two types of subsidies. There are two types of taxes and two types of subsidies. One is product tax and production tax. Product tax and production tax. And there are two types of subsidies. One is product subsidy and production subsidy. Product subsidy and production subsidy. Okay, so what is meant by tax? Tax means something that is collected by the government. गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और उसी टैक्स के पैसे से अपने जो एक्सपेंडिचर है वो करती है, अलग अलग स्कीम्स चलाती है. तो टैक्सेस के टू टाइप्स है, एक तो प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन टैक्स.
And what is subsidy? Subsidy is the financial help provided by the government to the producers. And there is dual motive, there is dual objective. First objective is to incentivize the production, and second objective is to reduce the market prices, to provide benefit to the consumers. Okay, win-win situation of both people. Now, what is the difference between product and production? What is difference between product tax and production tax? What is difference between product subsidy and production subsidy? Now let's discuss. So whenever product tax is imposed per unit production. Okay, product tax is imposed on each unit. Product tax is imposed on each and every unit. Okay, for example, my factory, I have a factory, and my factory is producing this particular product. Okay, so the product tax will be imposed on each and every unit of this product. Okay, for example, the price of this product, this is, what is this? This is a simple camera stand, or a simple phone stand, and the price of this product is, for example, 5 rupees, and product tax is 1 rupee. For example, GST is example of product tax, because it is imposed on each and every product, each and every unit. So 5 rupees is the cost of this product, and 1 rupee is the product tax, that is GST. The final price or the market price will be 6 rupees. Okay, so whenever we say product tax, that means it is imposed on per unit of production. It is imposed on each and every unit of production. Okay, I am going to repeat. Okay, now am I audible? Yes, I am going to repeat my point. Product tax, whenever we call product tax, we impose that tax on each and every unit of production. Okay, product tax is imposed on per unit of production. क्लियर? अभी तक ठीक है? अभी तक सबको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, जरा कमेंट करके बताइए, और प्लीज रेज योर हैंड so that I will know you am I audible or not. Yes, so product tax is imposed per unit. And let's talk about product subsidy. Product subsidy is also same thing. Whenever subsidy is provided, the subsidy is provided on per unit of production. Product subsidy is provided on per unit of production. That means on each unit of production, per unit. Okay, for example, solar lamps. सोलर की टेक्नोलॉजी में सोलर फोटोवोल्टाइक सेल है या फिर सोलर पैनल्स है, तो गवर्नमेंट ईच यूनिट पे, हर यूनिट पे सब्सिडी देती है. ओके, सो दैट इज प्रोडक्ट सब्सिडी. नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन टैक्स? व्हाट इज प्रोडक्शन टैक्स? प्रोडक्शन टैक्स is a tax imposed on production. That means entire production. That means it is not imposed per unit. It is not imposed on each unit. It is not imposed on each unit, but it is imposed on whole production.
That means the product tax is imposed irrespective to the volume of production. Volume of production. Okay, understood? Let me explain again. Let me explain the meaning. Okay, let me join this meeting again. Okay, am I audible now? Am I audible? If my screen visible? Yes, should I proceed? Please let me know. Yes. Am I audible now? Okay, and screen is visible? Yes. So, ओके, कहाँ तक आपने सुना मुझे बताइए, कहाँ तक सुना आपने? ओके, ओके, ओके. The production tax is imposed on entire production. Production tax is imposed on whole production. It is not imposed on each unit. For example, the best example of production tax is property tax. For example, if I have a company and I am producing this product, I showed you, I show, I have told you about this. Okay, my company, my factory produces this product, little product, and I have a land, I have a factory. So I have to pay registration tax, registration duty. I have to pay property tax. Okay, so irrespective of the volume of production, I have to pay that tax. Irrespective of the number of units produced, I have to pay that tax. For example, if I pay registration duty, for example 2.5 lakh rupees, 2.5 लाख रुपीस की मैंने रजिस्ट्रेशन ड्यूटी पे की. अब इसके बाद मैं कितने यूनिट्स बनाता हूं उससे कोई लेना देना नहीं है. आई प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, आई प्रोड्यूस 10 लाख यूनिट्स, और आई प्रोड्यूस 50 लाख यूनिट्स, I don't have to pay any tax anymore. Okay, it is annual tax and it is irrespective of the volume of production. Understood? If you are understood, please raise your hand. If you got my point, please raise your hand. So it is irrespective of production, if it is irrespective of the volume of production. And similarly, the concept of production subsidy, same is the concept of production subsidy. Production subsidy is given irrespective to the volume of production. Okay, it is on entire production. Okay, for example, क्या आपको उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता है? हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स को 6,000 रुपीज देती है. उस स्कीम का मुझे नाम बता दीजिए. हर साल गवर्नमेंट फार्मर्स को 6,000 रुपीज का अमाउंट देती है. स्कीम का नाम बता दीजिए. द नेम ऑफ दैट स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना. And every year 6,000 rupees are distributed among farmers every year in 3 installments. 2,000 के 3 installments भेजे जाते हैं. Okay, so only because the farmer is in the agriculture sector, he is getting 6,000 rupees. अब वो कितना गेहूं उगाता है, कितना प्रोडक्शन होता है, उससे कोई मतलब नहीं है. He takes 100 quintal production, 200 quintal production, or 500 quintal production. Irrespective of the production, every farmer is going to get 6,000 rupees. समझ में आया? Everybody, please raise your hand.
Yes, Upasna. What about Megha? What about Rishu Yadav? What about Justice? बिकॉज अगर आपको अभी समझ में आया तब आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा समझ। जो लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर अभी समझ में आ गया तभी आपको समझ में आएगा अगला कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसके आगे का कंसेप्ट अभी हम देखेंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट एंड न्यू कंसेप्ट इज द बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस, अब ये बेसिक प्राइस क्या बोला है? अब देखिए, हमने फैक्टर कॉस्ट देख लिया, हमने मार्केट प्राइस देख ली, हमने टैक्सेस के बारे में देख लिया, हमने सब्सिडीज के बारे में देख लिया, ओके। हमने प्रोडक्शन टैक्स के बारे में देख लिया, प्रोडक्शन सब्सिडी के बारे में देख लिया, हमने प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी के बारे में देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन? The relation is very simple. If we have a factor cost, we know factor cost very well. Whenever the product is in the factory, then we consider its factory cost. Now, keep this in mind every time. Whenever you are going from factor cost to market price, okay, this is our journey. This is a journey of a product. This is a journey of a product. The product is going from the factory to market. Okay, that means the product is going from factor cost to market price. Okay, now whenever the product is going from factor cost to market price, you have to keep this in mind. Every time subsidy is reduced, there is a minus sign for subsidy. So it is, be it is production subsidy, be it is product subsidy, subsidy is reduced and tax is added. Tax is added. Very simple formula. What is the formula? Factor cost plus indirect taxes minus subsidy is equal to market price. Okay, so this is the simple funda. Whenever factor cost, whenever product is going from factor cost to market price, we have to reduce the subsidy and we have to add the tax. ओके, तो अभी देखिए, ये हमारा जर्नी है। वी आर अ प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट है और हम एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, हैप्पी प्रोडक्ट है। अब हम फैक्ट्री में वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी फैक्ट्री में क्या कॉस्ट होगी? हमारी फैक्ट्री में कॉस्ट होगी फैक्टर कॉस्ट। अब हमें जाना है मार्केट प्राइस की तरफ, तो रास्ते में हमें डेस्टिनेशन क्या लगेगा? हमें बेसिक प्राइस लगेगी। बेसिक प्राइस विल बी द इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन। और बेसिक प्राइस हमें कब मिलती है? जब फैक्टर कॉस्ट में से हमने प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस की और जब हमने उसमें प्रोडक्शन टैक्स को ऐड किया। When we add production tax and reduce production subsidy from the factor cost, we get basic price. अब बेसिक प्राइस से हमें जाना है मार्केट प्राइस की तरफ। तो अगेन यू नो, हमें सब्सिडी को रिड्यूस करना है और टैक्स को ऐड करना है। और बेसिक प्राइस से अगर मार्केट प्राइस आपको जाना है तो आपको प्रोडक्ट सब्सिडी रिड्यूस करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। सी, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड और नॉट। आपको समझ में आया या नहीं आया? गौर से देखिए इस डायग्राम को, ठीक है। बताता हूं, वो भी बताता हूं, बट पहले समझ लीजिए कि बेसिक प्राइस हमें कैसे मिलती है एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। Okay, see the relation between factor cost, basic price and market price. See, this production subsidy
ये प्रोडक्शन सब्सिडी किसे मिलती है? प्रोड्यूसर को। वेट, प्रोडक्शन सब्सिडी किसे मिलती है? प्रोड्यूसर को। हु गेट्स द प्रोडक्शन सब्सिडी? प्रोड्यूसर। हु हैज टू पे प्रोडक्शन टैक्स? प्रोड्यूसर। ओके, प्रोडक्ट सब्सिडी एंड प्रोडक्ट टैक्स. For example, the market price of a good is 100 rupees. For example, कोई भी प्रोडक्ट है उसका मार्केट प्राइस है 100 रुपीज, प्रोडक्ट सब्सिडी मिली है 10 रुपीज और टैक्स है 10 रुपीज. अगर आपको मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस निकालनी है तो आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा? अभी आप उल्टा जा रहे हो, आप मार्केट प्राइस से पीछे जा रहे हो, तो आपको सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा. So you will add 10 rupees and you will reduce 10 rupees. So again basic price will be 100 rupees. So this is the total amount receivable by the producer. This is the total amount receivable by the producer from the consumer. Basic price वो price है जो that is receivable by the producer. प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिलती है कस्टमर से, उस प्राइस को हम बेसिक प्राइस कहते हैं. अब उसमें हम सब्सिडी और प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी को हम उसमें नहीं देखते, क्योंकि सब्सिडी कहाँ से आने वाली है? गवर्नमेंट से आने वाली है. और टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स किसे पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. बट उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो आनी चाहिए सेलर के पास या प्रोड्यूसर के पास, वो क्या रहेगी? वो बेसिक प्राइस रहेगी. समझ में आया? एनी डाउट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस सर्विस, स्वप्न स्टडीज ऑनलाइन एजुकेशन, एंड आई एम सेलिंग यू द कोर्स 1000 रुपीज. अभी आपको समझ में आएगा, 1000 रुपये का कोर्स है और उस पर जीएसटी कितना है? 18%. दैट मीन्स 180 रुपीज आपको टैक्स पे करना है. ओके, तो व्हाट विल डू, आप 1000 रुपीज प्लस 180 रुपीज मुझे भेजोगे, बट वो जो 180 रुपीज है वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा. और मुझे कितना मिलेगा? मुझे 1000 ही मिलेगा. तो फॉर मी 1000 रुपीज इज द बेसिक प्राइस. समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाथ ऊपर कीजिए. प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. तनवर, yes, good evening. Hello Tanwar. Yes, thank you so much. Yes, please keep attending my lectures. I'm so sorry, I just saw your comment. Okay, so I was just telling my example. I am selling this course at 1000 rupees. 1000 rupees plus product tax, that is GST, and GST is product tax because it is imposed on each unit. So it will be imposed on each course I sell. Okay, so 1000 rupees is my basic price. 10% is the GST, that means 180 rupees. So the student is going to pay 1000 plus 180 rupees, but that 180 is going to government. So what is the net amount receivable? Is 1000 rupees. So 1000 rupees is my basic price. And whatever about प्रोडक्शन सब्सिडी तो मुझे मिल रही है. अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन सब्सिडी देगी तो मुझे फायदा होगा, मुझे इंसेंटिव मिलेगा. अगर प्रोडक्शन सब्सिडी नहीं देगी तो नहीं फायदा मिलेगा. और प्रोडक्शन टैक्सेस तो मैं पे कर ही रहा हूँ. जो भी मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो भी मैं ये ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस पर जो प्रोडक्शन टैक्स है, मतलब एवरी ईयर मुझे जो टैक्स पे करना पड़ता है वो तो मैं कर ही रहा हूँ.
but what is the net amount receivable by the producer? Net amount receivable by the producer from the consumer. That is my basic price. जो मेरा स्टूडेंट है उससे मुझे कितना अमाउंट एक्सपेक्टेड है, दैट इज 1000 रुपीज, एंड दैट इज माई बेसिक प्राइस. I hope it is pretty much clear. If you have any doubt about yesterday's session, today's session, please let me know in the comment box. Tanwar, if you want to attend live class, I am going to share this link, meeting link in the description or chat box. You can attend live class tomorrow, same time. Okay, this is Google Meet for you. This is Google Meet link for you. You can come tomorrow and join my live class on Google Meet. Okay, so I think for today it is sufficient. आज के लिए इतना काफ़ी है. अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछिए. So these are very basic concepts, very important for UPSC prelims. इसी प्रकार से हम सारे important concepts पढ़ने वाले हैं. कॉन्कर इकोनॉमी कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे, स्वप्न स्टडीज ऐप पे. आपको मैंने लिंक शेयर की है. व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक शेयर की है. टेलीग्राम पे शेयर की है. आपको पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए होंगे. और यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दी है, वहाँ पे भी आप जाके विजिट कर सकते हो. दिस इज कॉन्कर इकोनॉमी कोर्स. ठीक है. तो इन कमिंग 45 डेज वी आर गोइंग टू कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी. आने वाले 45 डेज में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को हम कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे. उसमें इकोनॉमिक सेक्शन, जो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स फेच करने की कोशिश करेंगे. ओके. और इसका जो ड्यूरेशन है, जैसे मैंने कहा आपको 45 डेज है. 45 डेज में हम पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का सिलेबस है, वो पूरा कवर करेंगे. देयर आर अराउंड 450 प्लस टॉपिक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. इन 450 प्लस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे. उसके साथ साथ देयर आर सो मेनी मॉक टेस्ट, देयर आर सो मेनी प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट. तो इस बार हमारा जो मिशन होगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स होगा. एंड इट इज दिस कोर्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एज वेल. तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, 2025, 2026, देन दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आप अगर ऐप पे जाओगे, कंटेंट सेक्शन में यू विल फाइंड द टेस्ट ऑफ द फोल्डर ऑफ टेस्ट्स. तो उसमें आज आपको एक टेस्ट भी दिखाई देगी, तो वो टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो. और इस कोर्स का जो लास्ट डेट है वो 15th ऑफ जनवरी है. आपको जो ऑफर दी गई है 15th जनवरी तक आपका ऑफर कोड वैलिड रहेगा. if you go to Swapna Studies app, let me show you the window. Yes, yes, please ask. Yes, I just missed your initial statement. Please let me know. For economics, there are so many books, but specifically talking, you can go for Sanjeev Verma or Ramesh Singh. You can specifically use Ramesh Singh or Sanjeev Verma. Okay. So I will be providing you the book list as well. So don't worry. I will be providing you the book list as well. Okay. So you can go through that book list. There are so many books.
See, in the app section, I have mentioned the number of books we are going to cover. The number of books we are going to cover. See, in the I will send you one PDF. I will send you one PDF on the WhatsApp group, as well as I will share the link in the description box of the YouTube. And see, Ramesh Singh is important, Sanjeev Verma is important, Shankar Ganesh is important. These three books are important, but you don't have to worry about any book. सर मेरे पास संजीव वर्मा नहीं है तो मैं क्या करूं? सर मेरे पास शंकर गणेश नहीं है तो मैं क्या करूं? सर तमिलनाडु एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सिर्फ एक बुक आपके पास अगर होगी तो सफिशिएंट है. कोई भी एक बुक, इवन इफ इट इज रमेश सिंह, इट इज ओके. But ultimately in this course we are going to cover each and every book. Ramesh Singh, Sanjeev Verma, Shankar Ganesh, everything we are going to cover. Whatever, all the important concepts with respect to UPSC prelims we are going to cover in our 45-day UPSC Conquer Indian Economy course. Okay, so I was showing you the link. This is the link. I will be sharing this link in the YouTube comment box. This is the Conquer Indian Economy for UPSC prelims course. And if you go to the the content section, there are practice tests. So first test is released today. So in the coming days, rest of the test will be coming. And from here, you can purchase this course and you can use the promo code. You can use the offer code ECO25, ECO25. So you will again get 25% off. Okay, you are going to again get additional 25% off on this course. So effectively, the price of this course will be 1000 rupees only. And with 25% off, the internet handling charges and GST, everything is waived for you, and only the price will be 1000 rupees. And this offer is valid till only 15th of January. Means only 4 days are remaining. Till 15th of January, you can use ECO25 code and you can enroll to this course. Okay, so I think this is sufficient for today. Let me take your leave today, and let's meet tomorrow in tomorrow's session. So tomorrow's session will be the last session of the free demo classes. Free demo classes का ये last session रहेगा, और फिर from Monday the regular batch will be continued. So you have time. Just hurry up, take admission, enroll yourself in this course, and join me in this wonderful journey. So if you have any doubt, you can reach out to me. You can reach out to the WhatsApp numbers, and I will be there to help you. I will be there. Yes, after enrollment, you will be getting my personal number, and on that you can directly talk with me. Okay? Before getting enrollment, if you have any doubt, you can just message on our WhatsApp number. You can just take the convenient time slot. If you want to talk with me, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप WhatsApp पे मैसेज कीजिए. जो कल आपको स्लॉट दिया जाएगा उस स्लॉट में आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, फिर आप मुझसे बात कर सकती है. आपको जो भी डाउट्स है आप वो क्लियर करवा सकते हो. And even after enrollment, you can connect with me on my personal WhatsApp number, can connect with me on my personal calling number, and I will be there for you to solve each and every query for you. आपका जो भी डाउट रहेगा, आपका जो भी पर्सनल प्लानिंग रहेगा यूपीएससी में, आई एम गोइंग टू हेल्प यू. Okay, so rest of the things we will discuss on call. If you want to call me, you just message on my WhatsApp number and our team will give you the convenient slot. Thank you so much. We will meet you tomorrow evening, same time, same